Let us talk about signal transduction pathways. As we have seen, whether or not a given gene is expressed very often depends on environmental signals. Signal comes in many forms. They can be small molecules such as sugars as in bacteria, but they can also be proteins released by one cell and received by another as in case of multicellular organisms. There are various ways that signals are detected by a cell and communicated to a gene. In bacteria, we saw that signals control the activities of regulators by inducing allosteric changes in those regulators. Often this effect is direct. A small molecular signal such as a sugar enters the cell and binds the transcriptional regulator directly और इसके बाद ये इसको जो है वो कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है. बट वी सॉ one example where the effect of signal is indirect, that is control of the activator NTRC. In that case, the signal is low ammonia levels induces a kinase that phosphorylates NTRC. This type of indirect signaling is an example of a signal transduction pathway. So signal transduction pathway ऐसा pathway है जिसमें के external signal जो है वो directly आके एक्टिवेटर को या रेगुलेटर को इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो इनडायरेक्टली किसी और वाया से आके जीन को इफेक्ट कर रहा है. सो सच पाथवेज आर कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज. द टर्म सिग्नल refers to the initiating ligand itself, the sugar or प्रोटीन फॉर एग्जांपल, यानी कि शुगर या प्रोटीन ने ही ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को इनिशिएट किया है, तो इसलिए ये शुगर या ये प्रोटीन जो है ये ही सिग्नल हैं. इट कैन आल्सो रेफर टू द इंफॉर्मेशन एज इट पासेस फ्रॉम डिटेक्शन ऑफ दैट लिगेंड टू द रेगुलेटर्स दैट डायरेक्टली कंट्रोल द जीन्स, दैट इज as it passes along a signal transduction pathway. In the simplest of bacterial cases, there was no distinction, of course, but once a signal transduction pathway is involved, there is this distinction. In addition, in eukaryotes, that most signals are communicated to the genes through signal transduction pathways, sometimes very elaborate ones. In a signal transduction pathway, the initiating ligand is typically detected by a specific cell surface receptor. The ligand binds to an extracellular domain of the receptor, and this binding is communicated to the intracellular domain. तो ये ऐसे ही है कि सेल सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेल सरफेस रिसेप्टर है. सेल सरफेस रिसेप्टर पे ये लिगेंड रिसीव हुआ, और इसके रिसीव होने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज़ ट्रांसमिटेड टू द इंट्रासेलुलर डोमेन ऑफ दिस रिसेप्टर. इस रिसेप्टर की एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है और एक इंट्रासेलुलर डोमेन है. तो ये मैसेज जो है बाहर से इंट्रासेलुलर डोमेन पे ट्रांसमिट हो गया, और फिर इंट्रासेलुलर डोमेन से बाय अ पाथवे विच इज़ कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन तक ट्रांसमिट किया जा सकता है. फ्रॉम देयर द सिग्नल इज रिलेड टू द रेलिवेंट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर, often through a cascade of kinases. How is the binding of ligand to the extracellular domain communicated to the intracellular domain? This can be through an allosteric change in the receptor, whereby binding of ligand alters the shape
and thus activity of the intracellular domain. तो ये जो है ये बाइंडिंग से कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आएगी उस रिसेप्टर में, और ये जो कन्फर्मेशनल चेंज है दिस इज कम्युनिकेटेड फर्दर. Alternatively, the ligand can act simply to bring together two or more receptors chains, allowing interaction between the intracellular domains of those receptors to activate each other. The STAT or signal transducer and activator of transcription. So the STAT pathway is a relatively simple example of signal transduction pathway. In this example, a kinase is bound to the intracellular domain of a receptor. So here you can see ये जो है ये कोई ligand या signal है, और जैसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ बाइंड होगा इसकी ये जो काइनेज है, ये काइनेज है, इसके जो है ये मैसेज जो है इंट्रासेलुलर डोमेन तक जो है वो कन्वे हो जाएगा. और उसके बाद ये जो इसकी इंट्रासेलुलर डोमेन है ये फिर कुछ और फैक्टर्स को रिक्रूट करेगा, जैसे स्टैट या SH2 ये जो हैं ये यहाँ पे रिक्रूट होंगे, और इसके बाद ये जो हैं दिस सिग्नल विल बी ट्रांसमिटेड टू द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के अंदर जो है इसको ट्रांसमिट किया जाएगा, और ये जाके डायरेक्टली जो है वो जीन के साथ इंटरेक्ट करेगा और इस जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा. When the receptor is activated by its ligand, it brings together two receptor chains and triggers the kinase in each chain to phosphorylate a particular sequence in the intracellular domain of the opposing receptor. तो जैसे ही ligand bind करेगा, ये जो दो different chains हैं receptors की, they will be brought together, और इनके ब्रॉड टुगेदर होने से जो है वो काइनेज एक्टिवेट होगा, और काइनेज फिर इनको जो है फॉस्फोरिलेट करेगा, और इस तरह से सिग्नल जो है वो आगे ट्रांसमिट होगा. दिस फॉस्फोरिलेटेड साइट इज देन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टैट प्रोटीन दैट वंस बाउंड गेट्स फॉस्फोरिलेटेड इटसेल्फ. तो फिर इसके साथ जो है स्टैट प्रोटीन आके बाइंड करेगी, और जैसे स्टैट प्रोटीन बाइंड करेगी ये खुद फॉस्फोरिलेट हो जाएगी. वंस फॉस्फोरिलेटेड द स्टैट डाइमराइजेस, मूव्स टू द न्यूक्लियस एंड बाइंड्स टू DNA, और फिर ये जो है ये स्टैट फॉस्फोरिलेट होके आपस में डाइमराइज हो जाएगी, दो यूनिट्स इसके मिल जाएंगे, और फिर ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करके डायरेक्टली DNA के साथ बाइंड हो जाएगी. Another example is the mitogen activated protein kinase MAPIC pathway that controls activators such as JUN, one of the activators that works at the interferon beta enhancer. In this case, the activated receptor induces a cascade of signaling events ending in activation of an MAPIC that phosphorylates JUN and other transcriptional regulators. So ये एग्ज़ाम्पल है इसकी. तो इसमें ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे आके बाइंड हुआ, ये जो है इसके दो चेन्स जो हैं वो डाइमराइज हुई, इसके बाद ये जो कुछ फैक्टर्स हैं ये आके इसके साथ रिक्रूट हुए, एंड दिस इज़ स्टिल इन एक्टिव फॉर्म, और उसके बाद ये GTP इसके साथ आके इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर इसके बाद एक लॉन्ग पाथवे चलेगा मैप के इससे मैप के, और फिर मैप के और फिर मैप के, और अगेन ये एक और जो है वो फैक्टर यहाँ पे फॉस्फोरिलेट होगा, और फाइनली ये जो फैक्टर है ये न्यूक्लियस में एंटर होगा, DNA के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा. The most common way in which information is passed through signal transduction pathways is via phosphorylation, but proteolysis
dephosphorylation and other modifications are also used.